लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। थियरी को और मजबूत कर रहा है। 2, मालदीव्स को डेवलपमेंट के लिए जिन पैसों की जरूरत है चाइना वो उन्हें भर भर कर दे रहा है। 3, मालदीव्स में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाकर वोट्स जीते जा रहे हैं, यानी मालदीव्स के लोग भी आज एंटी इंडिया सेंटिमेंट को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए लक्षद्वीप डेवलप करना भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट टू ब्लैकमेल मालदीव्स बट टू डेवलप आवर ओन मालदीव्स, ताकि हमारी सिक्योरिटी मालदीव्स के पॉलिटिक्स पर निर्भर ना रहे। इंडियन ओशन में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन प्रेजेंस बना रहे, लक्षद्वीप की डेवलपमेंट हो और हम इंडियंस के लिए एक सुंदर Maldives alternative बने। Social media row. Now, in his post on social media platform X, the minister accused India of targeting Maldives and said that India faces significant challenges in competing with Maldives in beach tourism. Now, this comes after Prime Minister's tweets about snorkeling in Lakshadweep went viral and prompting many social media users in India to suggest that Lakshadweep as an alternative tourism destination to Maldives. Now, India-Maldives relations, remember, in the last few months have remained strained after President Mohammad Muizzu came to power in 2023 in November and issued an election pledge to remove a small contingent of 75 Indian military personnel in the country and alter the Maldives' India First policy. Now, Muizzu is set to pay a state visit to China as well from the 8th of January to the 12th. According to the Chinese Foreign Ministry. Now, this is being interpreted as a high. Maldives के इलेक्टेड लीडर्स, मिनिस्टर्स इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि खुले में टॉयलेट करना हमारा नेशनल कल्चर है और ये कल्चर हम वेस्ट में भी ले जा रहे हैं। भारत मालदीव्स जितना सुंदर कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या ये सच है? ये नजारे देखिए, सुंदर बीचेस देखिए, क्लियर स्काईज और उससे भी क्लियर पानी देखिए। फर्स्ट टाइम देखने पर लगेगा कि ये थाईलैंड है, मॉरिशस है या मालदीव्स, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारा भारत है। ये है लक्षद्वीप, भारत का बेस्ट केप्ट सीक्रेट। कुछ ही दिनों पहले लक्षद्वीप से हमारे प्रधानमंत्री जी के फोटोज वायरल हो गए, जहां उन्होंने लक्षद्वीप के क्लियर वाटर्स में स्नॉर्कलिंग की। और तो और लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस हुई। ये बात मालदीव्स की सरकार को चुभ रही है और वो कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू, ये ट्रोल्स नहीं है, ये एक्चुअल मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। उन्हें भारत की डेवलपमेंट से प्रॉब्लम क्या है? सच तो यह है कि ये पोस्ट सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, भारत के सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक रिमाइंडर। क्योंकि लक्षद्वीप भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत के पास लक्षद्वीप होना मालदीव्स और चाइना जैसे देशों के लिए एक डेंजर है। देखते हैं कि भारत एक तीर से दो निशाने कैसे लगा रहा है।
नीति आयोग ने इन आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सामने रखकर अंडमान और लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर इको टूरिज्म डेवलप किया जाए। नीति आयोग का प्लान ही यही था कि ट्राइबल एरियाज को छोड़कर बाकी एरियाज में डेवलपमेंट हो। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों यूटीज की बात हो रही थी। यहाँ आपको शायद काला पानी नाम की सीरीज याद आई होगी, जहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर ट्राइबल एरियाज में घुसा जाता है, रूल्स तोड़े जाते हैं और इसका अल्टीमेटली नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है। सीरीज काफी बढ़िया है, लेकिन हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग में काम करने वाले लोग एक्सपर्ट्स होता है। सालों का स्टडी और रिसर्च करने के बाद ही चीजें अप्रूव होती हैं। एग्जिस्टिंग कंडीशंस और आने वाले थ्रेट्स को स्टडी करके ही कदम उठाए जाते हैं। इस मास्टर प्लान में अलग अलग पैकेजेस यानी अलग अलग स्टेजेस हैं। पैकेज 1 में अंडमान के आइलैंड्स एव्स, लॉन्ग, स्मिथ एंड रॉस आइलैंड्स डेवलप होंगे और दूसरे पैकेज में लक्षद्वीप के बंगाराम, चेरियाम, मिनिकॉय, सुहेली एंड तिनका डेवलप होंगे। यहाँ 11 एंकर टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, जिनके अराउंड पूरी इको टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगी। यहाँ इको टूरिज्म ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों अलग अलग छोर पर होते हैं। दोनों में एक टग ऑफ वॉर का खेल शुरू होता है। अगर हमने एनवायरनमेंट को चुना तो डेवलपमेंट नहीं होगी, और अगर डेवलपमेंट को चुना तो एनवायरमेंटल डैमेज होगा। लेकिन इस बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट 2019 में ही पब्लिश हो चुकी थी। आने वाले समय में सरकार का प्लान ये है कि 100 ऐसे आइलैंड्स भारत में ही डेवलप करने हैं जो टूरिज्म डेस्टिनेशंस बन सकें। आगे जाकर 2021 में 370 फ्लोटिंग विलास का टेंडर निकला, जिसकी टोटल वैल्यू थी 800 करोड़। लेट मी रिमाइंड यू कि मालदीव्स में आने वाले 1/4 टूरिस्ट इंडियंस हैं, 23%। सोचिए, अगर इनमें से सारे टूरिस्ट को एक सस्ता और बेहतर अल्टरनेटिव भारत में ही मिल जाए तो मालदीव्स का दुकान बंद हो जाएगा। चैप्टर 4, चाइना का मालदीव्स पर कंट्रोल। In 2014, the man of the masses, the visionary, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi made a promise for a change to the people of India. Har Ghar Jal, empowerment of Nari Shakti, Swachh Bharat, free rations for the poor, Digital India, direct benefits transfer, housing for all, Ayushman Bharat, prosperity for farmers, unprecedented opportunities for the youth. The Honorable Prime Minister, while fulfilling the promises, set benchmark for various developmental parameters in the country. With the vision and guidance of Honorable Prime Minister and along with the relentless and dynamic leadership of Honorable Administrator Sri Praful Patel, Lakshadweep is witnessing the largest developmental milestone in the archipelago's history. Even after 75 years of independence, the level of development in Lakshadweep Islands has not been commensurate with its potential. However, in the recent decade, the Lakshadweep administration has been ushering in a new development paradigm by focusing on all fronts for the growth and development of the islands. On this historic day, as the islands bloom into a new era, our Honorable Prime Minister is dedicating 5 prestigious projects worth rupees 1,156 crore to the people of Lakshadweep to usher in a positive difference in their lives. Kerala Lakshadweep Islands Submarine Optical Fiber Cable. On 15th August 2020, during his independence speech from the ramparts of Red Fort, Sri Narendra Modi announced the dream project of the submarine optical fiber cable. लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। The usage of the internet is no longer a luxury to the people of Lakshadweep. Today, we are witnessing Lakshapurti. With the guidance of the Honorable Prime Minister, 11 islands of Lakshadweep have 100 Gbps under KLI submarine optical fiber cable connectivity project worth rupees 1,072 crore. LTTD, Low Temperature Thermal Desalination Plant, Kadmat. Even after 75 years of independence, people of Lakshadweep had difficulty in accessing clean drinking water. UT administration tied up with the National Institute of Ocean Technology (NIOT) to develop indigenous and cost-effective low-temperature thermal desalination (LTTD) plant that converts seawater into potable water without reverse osmosis. The LTTD plant at Kadmat is worth rupees 32 crores. IRBN, Indian Reserve Battalion.
In 1996, the Government of India announced the allocation of the India Reserve Battalion (IRBN) for 3 UTs including Lakshadweep. Under the UTL administration, the construction of an administrative block and 18-man barrack with all amenities for IRB headquarters was completed at an estimated cost of rupees 19 crore. Solar power plant. The archipelago relied on diesel-based power plants for electricity generation across 10 islands of Lakshadweep with a capacity of 26 megawatt. However, the diesel power plants posed multiple obstacles for the administration. During the 4th Island Development Agency meeting chaired by the visionary Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, it was decided to implement solar power projects in the UT of Lakshadweep. Keeping up with the commitment, Solar Energy Corporation of India, with the active support of Lakshadweep administration, has successfully commissioned 1.4 megawatt solar power plant in Kavrathi at an estimated cost of rupees 16 crore, in line with the commitment of our nation towards green and sustainable energy sources. JJM, Jal Jeevan Mission. With scarce underground freshwater resources and being surrounded by sea, the islanders had to rely on groundwater wells for drinking water. The water supply through desalination plants was also done through street water supply. UT administration under the Jal Jeevan Mission of the Government of India has taken up house-to-house functional tap connection project in all the inhabited islands of Lakshadweep. On the outset, the work in Agathi and Minikoi has already been completed. This marks the beginning of a new era of progress, prosperity, and unprecedented opportunities for the people of Lakshadweep, uplifting the islands as a thriving center of innovation on the vibrant tapestry of India. Viksit Lakshadweep, Modi की गारंटी। सिर्फ टूरिज्म के बारे में नहीं है। मालदीव्स एक छोटा देश होने के बावजूद भारत को चुनौती दे रहा है। ये बातें किसी बड़े सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। 2008 में ही चाइना ने मालदीव्स का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जान लिया था। मालदीव्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका जियोग्राफिक लोकेशन। ये मैप देखिए, चाइना के पास सब है लेकिन एक चीज नहीं है और वो है तेल। चाइना सऊदी और दूसरे अरब देशों से तेल इंपोर्ट करता है। ये सारा माल जो है वो इसी रूट से आता है। कल जाकर अगर भारत और चाइना के रिलेशंस और खराब होते हैं और मालदीव्स का सपोर्ट भारत को होता है तो ये चाइना के ट्रेड के लिए बैड न्यूज होगी, क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट होने वाला सारा माल भी मालदीव्स के नजदीक से होकर गुजरता है। आप चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां चाइना भारत के अराउंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, वहां के इलेक्शंस में इंटरफियर कर रहा है और उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। भारत को ओशन के सब ओर से घेर रहा है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में हमने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया। चाइना इंडियन ओशन के आइलैंड नेशंस के साथ दिन ब दिन अपने रिलेशन सुधार रहा है और मालदीव्स जैसे छोटे देशों को चाइना की जरूरत है। 2011 से पहले मालदीव्स लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री यानी LDC के लिस्ट में आया करता था, लेकिन अब वो उससे बाहर है। यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने यह समझ लिया है कि अब मालदीव्स धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो उन्हें हमारे एड की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं। इंटरनेशनल एड यानी आने वाला पैसा कम हो गया तो डेवलपमेंट होगी कैसे? एज अ रिजल्ट मालदीव्स को नए स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाने पड़े और चाइना ने इस चांस पर जमकर डांस किया। ये है चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज। ये 2018 में पब्लिक के लिए खुला। इसकी टोटल कॉस्ट $200 मिलियन है और ये सारा पैसा चाइना से लोन के तौर पर लिया हुआ है। वैसे ही चाइना ने मालदीव्स के साथ 2017 में कई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी किए। ओके, मालदीव्स एक छोटा देश है, उनका टोटल GDP बस $5 बिलियन है और उनका सिर्फ चाइना के साथ जो डेट है वो उनके GDP के 1/5 ऑलरेडी हो चुका है। यानी मालदीव्स जल्द ही चाइना के एक डेट ट्रैप में अटकने वाला है। ओके, तो कंक्लूजन, there's been an organic wave of interest in Lakshadweep since Prime Minister Modi posted a 1-minute 28-second video about his trip to the island territories in the Arabian Sea. Lakshadweep has topped the search lists in the last 3 days on Google. Travel portals are offering special discounts for Indian beaches. The Prime Minister's video also triggered a diplomatic face-off with Maldivian ministers and MPs, as you just saw, unleashing racist attacks. That backlash has now resulted in several Indian tourists, we don't really know how many, cancelling their planned travel to Maldives. द्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले
लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। 3 days after the Prime Minister posted this video of his trip to Lakshadweep, there's been a tsunami of interest. Lakshadweep was Google's top searched keyword for 2 days after the Prime Minister posted pictures from his trip to the Union Territory. A host of celebrities, including actors and sportspersons, joined in, asking people to explore Indian islands. From Salman Khan to Varun Dhawan, Shraddha Kapoor to Ranveer Singh and Amitabh Bachchan, PV Sindhu to Virendra Sehwag and Sachin Tendulkar. The Prime Minister's post triggered a massive interest in unexplored beach destinations in India, especially Lakshadweep. So much so that Make My Trip declared that the portal had observed a 3,400% increase in on-platform searches for Lakshadweep. The surge in searches prompted Make My Trip to launch a Beaches of India campaign. Lakshadweep has seen a remarkable 3,400% increase in searches ever since our Honorable PM visited the islands. So this kind of inspired us to build an entire campaign around it. So we are launching Beaches of India. We are also providing consumers with remarkable deals and discounts so they can actually live this experience and see these beaches for real. If on one hand the interest in Lakshadweep is soaring, Maldives has taken a nosedive. Maldives is facing a wave of cancellations of trips by Indians after a series of comments from the island nation targeted Prime Minister Narendra Modi for his visit to Lakshadweep. Screenshots of cancelled flights and hotel reservations began circulating online, and the hashtag Boycott Maldives trended on social media platforms in India. Travel agency Ease My Trip has suspended all flight bookings to Maldives. For us, Ease My Trip, which is a homegrown company, one of the largest travel portals, we are ready to sacrifice about 2.4 lakh bookings which happen on annual basis to Maldives in order to make a statement that for us, always and always nation will come first. And in respect to that, we have basically taken a consideration of not booking any flights to Maldives from India henceforward. In the year 2023, Indians made for 11% tourists in Maldives. The backlash against the island nation and the resurgence of interest in Indian islands is sure to hurt Maldives more than it imagined. Bureau report. फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है। हमारी नेवी अरेबियन सी और इंडियन ओशन में पायरेट्स से लड़ती है। कुछ ही दिनों पहले आपने ये रेस्क्यू वीडियोस तो देखे ही होंगे, लेकिन भारत का ये बढ़ता हुआ प्रेजेंस चाइना के डोमिनेंस के मास्टर प्लान के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि अब चाइना इकलौता एशियन जायंट नहीं है। ऑफ कोर्स हम टेक्नोलॉजी वाइज आज चाइना को टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन चाइना हमें ग्रो होने से पहले ही रोकना चाहता है। इलेक्ट होने के बाद यूजुअली मालदीव्स के प्रेसिडेंट पहले भारत आता है, मानो कि ये ऐसे एक ट्रेडिशन जैसा बन गया है। लेकिन इस बार मुइजू ने ये ट्रेडिशन ब्रेक किया। पहले तो वो टर्की गए और उसके बाद अब वो चाइना जाने वाले हैं, यानी उन्होंने भारत को एक बार नहीं दो बार स्नब किया। एक्चुअली स्पीकिंग भारत से ही उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। भारत उन्हें बिजनेस भी देता है और एसेंशियल रिसोर्सेज भी। मालदीव्स आने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडियन होता है। हर 4 में से 1 टूरिस्ट इंडियन होता है। मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म फोकस्ड है। फिशरीज और टूरिज्म को मिलाकर उनकी 40% इकोनॉमी बनती है। मालदीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब उन्हें रेडार्स बनाने थे, तब हमने उन्होंने $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। लेकिन ये सारी बातें भूलकर मालदीव्स चाइना की ओर झुक रहा है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हमारे कई सारे वीडियोस में चाइना का जिक्र क्यों होता है। चाइना एक ऐसा देश है जिसके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना ही उनका सिनिस्टर मास्टर प्लान खुलता जाता है। चाइना हरकतें ही कुछ ऐसी करता है, लेकिन चाइना के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जानते हैं भारत के सीक्रेट वेपन के बारे में। चैप्टर 2, भारत का सीक्रेट वेपन। मालदीव्स की बात बहुत हो गई, अब भारत वापस आता है। लक्षद्वीप भारत के 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है। केरला से बस 360 किलोमीटर दूर 36 आइलैंड का ये एक स्वर्ग है, जिसमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं। ये सारे आइलैंड्स काफी छोटे छोटे हैं। इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड है ये एंड्रोट आइलैंड।
जो सिर्फ 4.66 किलोमीटर लंबा है और 1.43 किलोमीटर चौड़ा। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इन आइलैंड्स का 97% हिस्सा फॉरेस्ट है और इसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यहाँ का टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 64,000 है, जिनमें से 90% से भी ज्यादा ट्राइबल लोग हैं। यहाँ टूरिज्म की शुरुआत 1994 में हुई थी और वो भी सिर्फ एक आइलैंड में। बाकी सारे आइलैंड्स ट्राइब्स के लिए और लोकल्स के लिए रिजर्व्ड थे। साथ ही साथ लक्षद्वीप एक इंपॉर्टेंट नेवल बेस भी है। चैप्टर 3 भारत का मास्टर प्लान। आज भारत लक्षद्वीप में 1156 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहा है, जिनमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट, पीने का पानी, फेरी सर्विसेज के साथ साथ इको टूरिज्म भी शामिल है। लक्षद्वीप न्यूज में आज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मालदीव्स को जवाब देने के लिए लक्षद्वीप को डेवलप किया जा रहा है। इसकी प्लानिंग बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। चलिए थोड़ा रिवाइंड। It is widely perceived that Prime Minister's tweets were intended to not only bolster the tourism of Lakshadweep, so far being neglected, but also at the cost of Maldives. Because remember, a lot of Indians visit Maldives. Just in 2021, the height of pandemic, around 2.91 lakh Indians visited Maldives. That is 23% of their market share. In 2022, around 2.41 lakh Indians visited Maldives, around 14.4% of their market share. Last year, till June itself, 1 lakh plus Indians visited Maldives. So if a big chunk of them, those Indians, start visiting Lakshadweep instead of Maldives, it will hurt why it hurts the most. The economy of the island nation that is dependent on a booming tourism sector. Now, why India wants to teach Maldives a lesson? Because Maldives has been increasingly behaving very strange and hostile to India. There has been a regime change, and we know how they have been posing up to China. The president Muizu, who has run a campaign on the basis on a promise that they'll replace all Indian troops that are present in the island nation, and now after winning, he has told India that they have to withdraw those troops. Not only that, before that, there was a hydrographic survey agreement that they said that they'll not renew, which was signed in 2019 when Prime Minister Narendra Modi visited the island nation. What's more, after winning, the first country he visited, President Muizu, was Turkey, followed by China. Both countries are perceived to be working against the national interest of India. So clearly, India had to send a signal and a strong one. And by posting those beautiful photos, by building up the infrastructure, yes, there's bottlenecks, there's a permission raj existent there in Lakshadweep. There are no direct flights from tier A cities. Those things are believed by the government. ऐसे शब्द यूज होते हैं तब वोट्स के लिए अच्छा होता है, लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है और फिर वोट्स आते हैं। इसीलिए मुइजू ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई और इलेक्ट होते ही भारत को एक फॉर्मल नोटिस भी भेज दी कि भाई आपके जवानों को वापस बुला लो, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। जब मोदी जी ने लक्षद्वीप के फोटोज और वीडियोस अपलोड किए तो मालदीव्स की गवर्नमेंट को मिर्ची लगी। याद रखिए, यहाँ पर मालदीव्स का मेंशन कहीं पर भी नहीं था। इट्स सिंपल, क्या भारत का प्राइम मिनिस्टर भारत के किसी लोकेशन पर जाकर भारत के लोगों को यहाँ विजिट करने के लिए नहीं कह सकता? इसमें मालदीव्स को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ट्वीट्स करना स्टार्ट किया और फिर हमारे लोगों ने भी बॉयकॉट मालदीव्स कहना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स ये आगे जाकर कितना फॉलो होगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इससे आप आज का इंडियंस का सेंटिमेंट समझ सकते हैं। मालदीव्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों? चलिए मैप देखते हैं। Prime Minister Narendra Modi just checkmate an increasingly hostile Maldives. For that, we have to just rewind a little bit. The year was 2021. It was the height of pandemic, and the Kashmir Valley, J&K, was absolutely tourist starved. Prime Minister took to X, now formerly known as Twitter, and there he posted and urged people to visit the tulip gardens of Srinagar. And then what? It was a barrage of visitors who flocked, and the local tourism skyrocketed. Prime Minister Narendra Modi wants to repeat the same with Maldives, and that's why probably yesterday he posted a long thread on Twitter, now known as X, with a lot of photos of him snorkeling or walking by lazily on white sand, and probably lazing around, sitting idly just in front of the white-blue ocean, just sending a signal that it's no less than Maldives. And remember,
the similarities between the two, between the Maldives and Lakshadweep, are absolutely stunning. They both have virgin islands. They both have blue oceans, absolutely untouched beauty, and the same kind of infrastructure increasingly that Lakshadweep will be providing, considering the fact that ITC Taj is going to open a couple of resorts in the next few years. Now, having said that, the moment the Prime Minister posted those photos, those beautiful photos that have gone viral ever since, there has been an absolute surge in terms of searches. Google search, I mean, News 18 has got in touch with Google and obtained the data, which shows that from January 1, there has been barely any searches about Lakshadweep. The moment those photos were out, there was a massive search. On Wednesday, it was the 9th most searched word on Google from India. At least 50,000 plus searches were there about Lakshadweep. The most common phrases that were searched on Google India were Lakshadweep, Lakshadweep Island, Lakshadweep Airport, fly to Lakshadweep, and distance between Kochi and Lakshadweep. So clearly, people are interested after Prime Minister's those beautiful photos that have gone viral. उन्होंने अपने कैंपेन को इंडिया आउट ये नाम दिया था। इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भारत के अच्छे दोस्त थे। वो रियलिटी जानते थे कि मालदीव्स एशिया का बहुत छोटा देश है। मालदीव्स के सबसे नजदीक भारत ही है जो जरूरत के समय उनकी मदद कर सकता है, और भारत ने वैसा किया भी है। ऑपरेशन पानी के थ्रू हमने 2014 में उन्हें मुफ्त में पानी प्रोवाइड किया था। ये करने वाले हम सबसे पहले देश थे। हमने उन्हें कोविड के समय वैक्सीन्स भी दी थी, और वो भी किसी रिटर्न की अपेक्षा न करते हुए। तो प्रॉब्लम क्या है? आज के समय हमारे कुछ मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में है। कितने पता है? एक वाइल्ड गैस लीजिए। द आंसर इज जस्ट 75,000 नहीं, 7500 भी नहीं, जस्ट 75। और ये जवान यहाँ पर क्यों है? 2009 में भारत ने मालदीव्स को कुछ हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे, और उसके बाद कुछ एयरक्राफ्ट्स भी दिए थे। इस मिलिट्री इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे मिलिट्री पर्सनल वहां पर हैं। प्लस उनके बॉर्डर सुरक्षित रखने के लिए हमने उनके लिए एक रेडार भी बनाया था। वो रेडार हमने बनाया था, इसीलिए वो रेडार यूज करने की अगले 30 इयर्स के लिए परमिशन हमें मिली थी। एंड दैट्स व्हाई द मिलिट्री पीपल आर देयर। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, क्या इन 75 जवानों के साथ भारत 500,000 पॉपुलेशन के मालदीव्स पर कंट्रोल करना चाहता है? घंटा। इन जवानों से मालदीव्स को क्या खतरा है, हमारी समझ के पर है। अगर आपको समझता है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।